ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଇଂଲିଶ ବୁକ୍ର ବିଷୟ ଦ ପ୍ରାଇସଲେସ୍ ଗିଫ୍ଟ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅମୂଲ୍ୟ ଉପହାର। ଏହି ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଚलो ଦେଖିବା। ଆଜି ଆମେ ଏଇଠୁ ଦେଖିବା। ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଥିଲା 1ରେ, ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଦ ରାଇଟର ଚୁଜ୍ ଦ କର୍ଣ୍ଣର ଟେବୁଲ୍ ଇନ୍ ଦ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭୋଜନାଳୟରେ ଲେଖକ କାହିଁକି କୋଣରେ ଥିବା ଟେବୁଲଟିକୁ ବାଛିଲେ? आंसर कौन हम? द राइटर चूज द कर्नर टेबल बिकॉज द रेस्टोरेंट वॉज वेरी क्राउडेड. He saw some of the chairs and tables had been pushed into a corner. He thought a corner place would be a suitable place माने कौन? उपयुक्त स्थान for lunch and skipping through a newspaper. बुझिएला? नंबर 2 कौन? हाउ डिड द राइटर स्टार्ट ए कन्वर्सेशन विथ द यंग गर्ल। यार अर्थ कौन? लेखक किपरि युवती झीटी सहित कथबार्ता आरंभ कले? आंसर द राइटर सॉ ए यंग गर्ल इन द रेस्टोरेंट ऑन द नेक्स्ट सैटरडे। बुझेगा कौन ना? लेखक कौन कहे नेक्स्ट माने लेखक ता पर जो शनिवार था से दिन से क्या से युवती को से देखिले रेस्टोरेंट रे। ही वेंट अप टू her and took the chairs opposite hers. He wished her a good afternoon. बुझेला? लेखक कौन कले ना से युवती जो कि बसला तार अपोजिट तार विपरीत स्थान से चेयर पकई बसले. He wished her a good afternoon. Then he was able to start a conversation with her. बुझेला? कौन कले देन तापर से कौन कले ना से युवती सहित से कथबार्ता आरंभ कले. क्वेश्चन नंबर 3 कर देला. How could the writer guess the girl to be प्रोपर्टी स्टिकर? यार अर्थ कौन ना झीटी दारिद्र्य प्रपीड़ता बोली लेखक किपरि अनुमान करें? आंसर कौन? द राइटर ऑन हिज फर्स्ट मीटिंग विथ द गर्ल हैड ऑब्जर्व्ड ए सैड एक्सप्रेशन इन हर आईज. सैड एक्सप्रेशन से लक्ष्य करते. द राइटर ऑल्सो केम टू नो फ्रॉम द वेटर ऑफ द रेस्टोरेंट दैट शी ओनली केम फॉर लंच ऑन सैटरडे बीइंग हर पे डे. Perhaps she did not earn much. All these things made the writer to guess the girl to be poverty stricken माने कौन? दारिद्र्य प्रपीड़ता. Question number 4. Which of the following do you think the author will talk about after meeting the girl? What are answer? Our C. Our answer about her family. Question number 5. I was moved by what he said. What impression did the writer get about the girl? अर्थ कौन? से जहाँ कहले मुझे प्रभावित हेले झीटी विषय लेखक की धारणा देले. आंसर बीइंग मूव्ड बाय द वर्ड्स ऑफ द राइटर क्यूरियोसिटी अबाउट द गर्ल ग्रे. ही टुक पिटी ऑफ हर पॉवर्टी एंड वांटेड टू हेल्प हर इन एनी वे. बुझेला? क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इम्प्रेशन डिड द गर्ल हैव ऑन इंडिया? झीटीर भारत ऊपर की धारणा थिला? भारत ऊपर की धारणा थिला? आंसर द गर्ल एंड हर मदर हैड गुड नॉलेज अबाउट इंडिया. दैट इज व्हाई दे वांटेड टू नो फ्रॉम द राइटर अबाउट द काइंड ऑफ कंट्री इंडिया वाज. हर मदर ऑल्सो वांटेड टू नो अबाउट पंजाब वेयर हर सन वाज पोस्टेड ऑन as a soldier. They thought that India was a land of too many snakes and tigers. People in India were often killed by them. They had a strange idea about Indians. They thought Indians were truthful and they could tell the past and future of men gazing at a ring. It is a land of miracles happenings. बुझेला? क्वेश्चन नंबर 7. Will it be too much of a lie? Why did the girl say? यह कौन एक खूब बड़ मिथ्या कि झीटी एपरी कहीं कहला? आंसर कौन? द गर्ल was too much worried about the miserable condition of her mother. She wanted to the writer to tell lie before her mother that her son Frankie was alive all right. She wanted the writer to tell this lie looking into the crystal for the benefit of her mother for a good cause. If a lie is told, if it could be no sin at all, that is why the girl said so.
बुझे क्वेश्चन नंबर 8 व्हाई डिड द राइटर फील असाम्ड टू फेस मिस्टर ब्रेथी at the time at the time he at the time of his return to India यार आंसर कौन लेखक कौन अर्थ लेखक भारत फेरी आसा बेले श्रीमती बेथी को भेटा कहीं लज्जाबोध करते उत्तर कौन हम आंसर एट द टाइम ऑफ हिज रिटर्न टू इंडिया द राइटर वेंट टू मैगी एंड her mother to say goodbye, but the family was in the mourning. Frankie and been killed in the fighting on the frontier. The water calculated and found the Frankie and had been dead some days before when he told his mother he was alive and well. Therefore, he felt ashamed to face Mr. Rithi out of shame. Mr. Gupta wrote to them announcing the departure. Question number 9 why was selling Maggie presented to the writer was an invaluable offering. आंसर कौन हम मैगी लेखकों को देइथिबा सिंगलटी कहीं एक अमूल्य उपहार थिला कौन मैगी लेखकों को जो सेलिंग देइथिला कौन पे अमूल्य उपहार थिला आंसर देखो the sealing that Maggie presented to the writer was not ordinary gift. It was the symbol of true love, sacrifice and emotion for her brother, as it was meant for the purchase of flowers to be sown on her brother's grave. The cost of the sealing was beyond all price. It was rare and of high value. Thus the sealing was an invaluable offering. Then देखो ए पर कौन देला लेट्स लर्न सम वर्ड्स आशा किसी शब्द शिखा कौन कहला वर्ड्स which are not derived or developed from other words are called primary words. जो शब्द गुड़िक अन्य शब्द मान उपलब्धि लाभ करूँ सेगुड़ी प्राथमिक शब्दावली कहुए जमी देला एग्जांपल ऑरेंज राइट फास्ट फ्लो इत्यादि एटसेट्रा कंपाउंड्स वर्ड्स यौगिक शब्द आर फाउंड आई रेकर्ड नाउन प्लस नाउन कौन हम विशेष्य प्लस विशेष्य मिसिक सब्जेक्ट कौन कौन वर्ड हम जमीक मूनलाइट विलेज राइट